everyone, I am Nurlan Talpur, today's host. Welcome to Eco Talks. Our guest is Angela Imdad. Angela Imdad runs a waste management company basically, and the waste management company is named Irverde. So, Irverde aims to reduce waste by recycling, and it also generates awareness among different institutions or corporations. Hello. Hi, Hello. Noor. Assalamualaikum. So sorry for the delay. Walaikum salam. Walaikum salam. It's okay. Actually, I got maybe my yeah, you are. Maybe my internet would be not that good because my internet connection was not working. Actually, I was trying to fix that, but now I'm connected with my hotspot. Okay. So I hope so it goes well. Okay. So I'm recording this. Are you okay with it? Yeah. Good. So I want to know okay, how you started this organization. Like, what was the journey like? What made you do this? Okay, so I'm an environmentalist by profession. I have done my MPhil, and fortunately, I was able to work with Sindh Environmental Protection Agency, which is the government side, which is taking care of the environment in Sindh. So while working over there, so I encountered many waste management companies as well, and the person I was assisting was in charge of the hospital waste management. So I assisted my sir in many of the projects. So for the period of 1.5 years. And from there, I learned that there are lots and lots of issues in our system which are not being listened or which are not being taken care of. And Karachi के अंदर तो of course waste का एक बहुत बड़ा मसला है. And hospitals का waste जब normal कचरे के साथ मिल के the livestock is feeding on it and there is no proper waste management system, so that actually, and I belong to a family of doctors and professors and nurses, so that was my pain point. Okay, my family is getting impacted with this. So I started working on giving training sessions in hospitals and nursing education centers to make them realize. Then I understood, okay, this is a very big area and it can be turned into an opportunity as well. It can be turned into a business model. So then हमने कुछ waste collect करना शुरू किया from different local restaurants. Luckily, we got incubated at the Nest IO in 2019 in the start of 2 months as we started, and it was only 2 months. And Nest IO की applications आई हुई थी. That was the biggest incubation center at that time. So we got incubated over there, and from there we learned a lot regarding the business and how the startup runs, what is the culture, what are the norms, what things we need to take care of, the financial models and everything. So 2019 में I started off and उस time पे we were dealing with the restaurants. उनके साथ हम routine में waste उठा रहे थे every day, and institutions, schools, universities हमारे साथ on board थी, and we were doing pretty well at that time. We did Karachi E 2020, उसकी पूरी waste management हमारे पास थी 2020 के अंदर. It was a 3-day event और सब Karachiites को पता है, it's one of the biggest events in Karachi that happen every year. So approximately in 3 days, there were 300,000 plus individuals that popped there, and we were able to not only handle all of the waste generating from there, but we have different volunteers from different schools. City school के बच्चे हमारे साथ थे and different schools के थे. So they were volunteering with us. In what sense? They were communicating that how much is it's important, the waste management, and हमने waste bins different किए थे, dry and wet waste. तो वो उनको ये बता रहे थे कि आपको किसमें क्या फेंकना है and why is this important, हम ये क्यों कर रहे हैं. This time Karachi EAT is going green. So that was a very big thing as well. Then COVID happened, things got a little down. फिर उसके बाद 2021 में we restarted with a bigger thing. We have two sites. One is at Highway, it's of 4 acres, and one is at Mangupir, it's of 1 acre. और वहाँ पे हमारे अब सारे operations run होते हैं, and we have 25 plus people in my team at the moment. Nice.
Okay, so far, have you received any support from the government or any other relevant department? So it's a little tricky thing Hmm. coming because waste management in Karachi, Pakistan is actually politicized. Yes, So true. it's a little difficult to work in this business because it's already a very big mafia involved. There are different sectors which are involved in terms of I won't mention the nations, Hmm. but there are different scavengers who literally pick the waste from the streets and वो वहां Hmm. पे जान के छोड़ा जाता है ताकि इस तरह से इमेज जाए एंड Hmm. ये सारे मसले हैं. So we try to handle that on private level at the moment, Hmm. but government के साथ हमने एक दो दफा कोशिश की है. बाकी अब इतनी ज्यादा अच्छी बात नहीं बन सकी. Now we have a better contact and let's hope so that सिंपल सी Hmm. बात ये भी प्राइवेट लेवल पे अभी हम जब कर रहे हैं तो there are some limitations. We can't True. अगर हमें पूरा समझ में भी आ गया how we can solve this problem, but we can't because there are very so many limitations. So if the government is on board with us, भले एक छोटे से एरिया के लिए ही for the pickup only, at least waste के pickup के लिए वो हमारे साथ involve हो जाए, so I guess we will be able to deal with the bigger problem in Karachi, which is all of the waste that is not being treated. So let's hoping for the best. बिल्कुल. ऑल्सो जहाँ तक बच्चों को लेके स्कूल्स में सेशंस वगैरह तो होते ही रहते हैं, बट डू यू थिंक देयर इज ऑल्सो अ नीड टू एजुकेट अडल्ट्स? एक लैक ऑफ अवेयरनेस है. Definitely, definitely. So 80%, more than 80% of our waste is mismanaged, and that is actually causing the whole problem, the pollution. So हमें कभी नहीं बताया गया. So that was the actually pain point, our starting point, because me and you were not taught in our childhood that we need to conserve our environment and how important is this. So अगर we don't have, अब लोग सब कहते हैं we don't have a planet B, but हमें बचपन में किसी ने नहीं बताया. अगर बताया होता तो शायद आज हमें बहुत डिफरेंट एक पाकिस्तान या एक कराची देखने को मिलता. सो बड़ों को डेफिनेटली डिफिकल्टी होती है, बट द गुड थिंग इज दिस, जैसे वी वर फीचर्ड इन मल्टीपल टीवी चैनल्स रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक. So we got a very good feedback from adults as well. Like a society reached us out. Three of the societies actually reached us out to start picking their waste from their societies. But because of different areas, we are not able to do it at the moment. But we are starting with one of them. So the point, as you question that, बड़ों के लिए भी कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. जो बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, even at my home, I have a different bin for the dry waste and different for compost. So नाइस. जो ड्राई वेस्ट है उसके अंदर मेरे फादर, देर आर टाइम्स के जो हमारा प्लास्टिक होता है वो भी जो है वो कंपोस्ट वाले में कभी चला जाता है. बट ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दे उनको उनको पता ही नहीं है ना कि इससे फायदा क्या होगा. सो जब तक हम सिर्फ चीजें लगा देते हैं, हम कहते हैं ऐसा करो, बट हम ये नहीं बताते कि इससे फायदा क्या होगा. सो दैट्स वेयर वी कम इन. लाइक स्कूल्स के अंदर भी जैसे हम सेशंस लेते हैं तो वी मेक देम रियलाइज दैट क्यों करना क्यों है ये, क्योंकि जो आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी चाहिए ना इंसान को काम करने के लिए, और हेल्थ उसकी बेटर होनी चाहिए. सब चीजें आके हेल्थ पे रुक जाती हैं. सो जब आप अब ये सारा कचरा आप अपने कहीं ना कहीं फेंक रहे हो, इट्स एंडिंग अप ऑन द सॉइल्स, और उसी सॉइल और मिट्टी के अंदर जो आपके वेजिटेबल्स और आपके खाने ग्रो किए जाते हैं वो आपके पेट में जाते हैं. यू गेट अनहेल्दी. देन उसके बाद जो आपकी कैटल फार्म्स एंड कैटल्स होती हैं वो भी इन्हीं कचरे के ऊपर जो है वो चल रही होती हैं, एंड देन यू ईट द मीट, यू गेट इम्पैक्टेड. सो इस तरह से बच्चों को जब समझाएं, एंड इवन द अडल्ट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे वी आर द वंस हुज गेटिंग इम्पैक्टेड विद इट, नॉट समवन एल्स. सो थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाएगी. बिल्कुल सही बात है. अभी तक हमने गवर्नमेंट की बात की और लोगों की भी बात की, आम शहरी आम लोगों की. डू यू थिंक देयर इज आल्सो अ नीड फॉर द मीडिया, टीवी चैनल्स वगैरह, इनकी इनको भी एक अपना पार्ट प्ले करना चाहिए? Definitely, definitely. And I guess as recently, so we had जैसे ही हम्म. एक हमारी एक चैनल ने हमारी वो किया स्टोरी कवर की, and we had line of interviews after that, like
Mashallah. Literally. Even now, we get calls from different Mm, channels to so that they can just showcase our story. So maybe it's the hype at the moment as well because of the COP28 and climate action that we are talking about, the SDGs of UN. So in सब की वजह से थोड़ा सा pressure भी है that people need to go green, people need to conserve their environment now. So media channel want to cover these stories. And I guess जैसे मैं I teach at mm, a university as well, so bachelor's की student को, so I even tell them that it's just one initiative. You just need to take a step, and I guess with the consistency and your hard work towards the right direction, things will fall in the right places. So it was not easy, as you asked. 2019 में it was not mm, easy कचरे का काम करना, like mm. for a woman. No, it was Mm. never easy. And अब थोड़ा सा easy हो गया. My even my family was not okay with it. अच्छा. Like MPhil कर लिया है, इतनी पढ़ी लिखी family है, why you need to do this? So, but I knew what my vision is because I was from the sector, so I knew what difference I can create. And you would be astonished to know Mm. this, that when we started off, so my co-founder Naushad used to pick the waste in his own car, अच्छा. and वो घर पे लेके आते थे मेरे, Mm, and मेरे घर के बैकयार्ड में हम लोग वो स्टोर mm, करते थे ओवर द वीक. एंड फिर जब वीकेंड आता था, सो क्योंकि वो भी जॉब कर रहे थे उस वक्त, आई वाज आल्सो इंडल्ज इन सम अदर एक्टिविटीज, वी स्टार्टेड ऑफ ना. तो फिर वीकेंड आता था, हम ग्लव्स चढ़ाते थे, mm, और मेरे बैकयार्ड में जो है वो हम बैठ के खुद सॉर्ट करते थे, बिकॉज वी डिडंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज कि हम लेबर रखें और ये सब करें. mm. तो हम खुद जो है वो ग्लव्स चढ़ाते थे, मास्क लगाते थे, एंड हमारा पूरा सैटरडे संडे जो है वो ऐसे गुजरता था. सो बट consistency matters. We didn't give Mm, up, even though things were difficult at times. But resources wise, family wise, society wise, even when we were like doing good as a startup, so mm, people used to look at us that okay, it's just a social startup. थोड़ा सा mm. काम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, then they'll just go, and नहीं चल पाएगा. But now seeing people believing in us and taking Irverde's name as we are doing something amazing, it's delightful to see, and the respect that we have now, it's amazing. Mashallah, mashallah. So you just said that it's not easy. So abhi tak what have the biggest challenges you have been facing since the start? सो सबसे पहले हमारा तो ये आ जाता है सोसाइटी का एक्सेप्टेंस इस बारे में Mm, कि दिस कैन बी अ थिंग, दिस कैन बी अ बिजनेस टू रन, एंड फॉर अ कंपनी लाइक अस, लाइक पढ़े लिखे लोग ये काम करें क्यों कर रहे हैं. बट थोड़ा सा उसको हमने ईज किया है. जब हम खुद काम कर रहे होते हैं तो लोगों को नजर आता है, ओके, खुद शर्म आ जाती है कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. देन mm, उसके बाद लोगों का खुद इस चीज को अडेप्ट करना, कि हम अगर छोटा सा एक एक्शन कर लें कि गाड़ी में चलते हुए अगर वी आर ड्रिंकिंग समथिंग या mm, वी आर ईटिंग समथिंग, सो वी डोंट नीड टू थ्रो द plastics and even the papers outside our vehicles while we are traveling. We just can just hold that in our car or our at our home, and then just put it in a bin or send it for the recycling. mm, उस चीज की थोड़ी सी अवेयरनेस. देन उसके बाद ये हमारी हो गई सोसाइटी लेवल पे काम करने की खुद. देन उसके बाद बात आ जाती है थोड़ी सी, अब ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं कि क्योंकि इट्स अ होल माफिया इन्वॉल्व्ड इन इट, mm, द वेस्ट मैनेजमेंट की थिंग. एंड थोड़ा सा वहां पे बहुत ज्यादा हमें रेजिस्टेंस आती है. देयर आर टाइम्स व्हेन माय देयर स्टिल लाइक फ्यू 3 weeks ago, one of my employees was beaten up and robbed mm, just outside our one of our sites, mm, because we were like maybe in between of their work or something. mm, So these kind of things happen, and that makes us a little worried. But we are not going to stop, because I guess these things are happening because we are at the right path. So that's the reason. Other than that, जो clients हैं हमारे, so पहले it was difficult to get clients on board. mm, अभी भी थोड़ा सा है, but still उनकी भी कुछ अलग requirements होती हैं, पैसे फिर involved होते हैं. अच्छा, लोगों को ये नहीं समझ आती ना, when we provide a service and we charge for it, like अभी भी तो mm, कचरा
उठाने के लिए आप घर पे पैसे देते हो ना, मेंटेनेंस में जाता है, या फिर आप वैसे अलग से भी देते हो। जी। बट जब हमारी जैसी कंपनी अगर कुछ अच्छा काम हम्म। करने लगी है तो दे वुड से कि क्यों, कचरे से तो आप बेच के कमा लेते हो ना, व्हाई वुड वी पे फॉर यू फॉर दैट। अफगानी आता है या सॉरी कोई और आता है तो वो लेके चले जाते हैं, एंड वी डोंट नीड टू गिव देम मनी। सो ये जो परसेप्शन है इस चीज का, यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। You need to understand that if somebody is coming up with a solution and they are trying to do it, at least help them a bit. Like मेरे ख्याल से 300 400 या 500 पर मंथ से कोई गरीब नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो लैक ऑफ पॉलिसी बिल्कुल नजर आ रही है इसमें, तो गवर्नमेंट और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनको क्या सजेशंस देंगे कि किस तरह की पॉलिसी और लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करानी चाहिए टू मेक इट बेटर? Right. So there are policies, but the problem is this, Noor, the implementation is not there. ओके। So implementation तभी आती है जब initiatives हार्ड वर्क के साथ लिए जाते हैं, ना सिर्फ अंडर द टेबल काम करके। सो अगर उस चीज को हम थोड़ा सा माइनस आउट करने लग जाएं एज फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन साइड, सो आई गेस थिंग्स वुड बी अ लिटिल बेटर। एंड हम जैसे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं वेस्ट के हवाले से या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सो मे बी एक चांस तो देके देखें, लाइक मेक देम पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। सो आई गेस थिंग्स विल वर्क आउट। हम जो हैं, जो जो इस्टेब्लिशमेंट साइड पे हैं या फिर जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन साइड पे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो कि काफी उन्होंने अपनी उम्र गुजार दी है इन कामों में, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि नए लोग आके कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो अभी भी ऐसे लेते हैं, मतलब आई एम बिग इनफ, आई एम एन एडल्ट नाउ, वो स्टिल अभी भी कुछ लोग ऐसे लेते हैं कि ये लड़की आके क्या कर लेगी, या फिर ये छोटे लोग आके क्या कर लेंगे, दे आर सो यंग। सो आई गेस द पोटेंशियल इज देयर। इम्प्लीमेंटेशन करवानी, थोड़ा सा डंडा जब तक नहीं मिलेगा, वही हम ही लोग होते हैं ना पाकिस्तान वाले, जो जब दुबई या यूएई या मिडिल ईस्ट, एटलीस्ट मिडिल ईस्ट भी चले जाए, वहां पे जाके सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही इवन बात है। जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा सा उल्टा हम कुछ करेंगे, वील गेट अरेस्टेड, देयर विल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट एक्शन। बट पाकिस्तान के अंदर वी नो कि कुछ भी कर लें, थोड़े से पैसे पकड़ा देंगे एंड वी कैन गेट ऑफ फ्रॉम एनीथिंग। सो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन एंड थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टनेस वाइज जरूरी है, एंड थिंग्स माइट वर्क आउट। बिल्कुल। सो अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह से यू हैव बीन डूइंग ग्रेट वर्क, तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर? So we are see ourselves. So we have been dealing with all type of the waste, and काफी चीजें हम कर रहे हैं at the moment. So खुद की हमारी प्रोडक्ट है एक, we make furniture from wood waste. So I see one of the verticals would be हमारा e-commerce स्टोर पूरा डेवलप हो रहा है, तो हमारी फर्नीचर की जो पूरी एक लाइन है जो कि अपसाइकल्ड एंड रिसाइकल्ड मटेरियल की होगी, तो उसकी एक पूरी मैं प्रोडक्ट लाइन देखती हूँ कि we are gonna be the manufacturers of it. अदर देन दैट एक रिसाइकलिंग कंपनी, सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि इर्वेदे इज अ वेस्ट बैंक, क्योंकि रिसाइकलिंग कंपनीज को इनफ मटेरियल नहीं मिलता, क्वांटिटी फॉर रिसाइकलिंग, एंड उस नौयत का नहीं मिलता, क्वालिटी भी नहीं मिलती। सो वी मेक श्योर दैट वी हैव दैट क्वालिटी एंड द क्वांटिटीज टू सेंड टू रिसाइकलर्स। सो मैं इसको एक तो ऐसे देखती हूँ। सेकेंडली एक और वर्टिकल है टेट्रा पैक की रिसाइकलिंग, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लाहौर में होती है। वी आर स्टार्टिंग दिस एट द मोमेंट इन कराची। सो ये 3 वर्टिकल्स को मैं देख रही हूँ, एंड लेट्स सी ओवर द टाइम, एंड यस इन 3 वर्टिकल्स को देखते हुए वी आर डिजिटलाइजिंग द सिस्टम, द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, द ट्रेडिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। सो डिजिटलाइजेशन जब इन्वॉल्व होगी तो काफी सारी डेटा डेवलप होने लग जाएगा इसका, जो कि अभी मौजूद नहीं है, एंड कार्बन एमिशंस पे वैल्यूएशन आसान हो जाएगी। एंड प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस बिजनेस के लिए, रेट्स बेटर होंगे, इकोनॉमीज बेटर होंगी, पीपल इन्वॉल्व इन इट, एंड आई गेस बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है हम प्रोवाइड कर सकेंगे फॉर आवर employees and the people, the stakeholders are involved in this business as well. Thank you so much for answering all my questions, and you have been doing great work. Mashallah say, I wish you best of luck in for your future. Thank you so Thank much you for so your much. time. Noor, I just wanted to add that जी. I would love to say this, that the youngsters, Hmm. they need to understand this, that things don't have it happen overnight.
Like, बिल्कुल. you need to put in the hard work and just wait for it. If you're True. consistent with all your hard work, and you are going towards the right direction, things will work out. And Pakistan is a beautiful country. True. Like, we need to stay here and look for solutions, Hmm. and one day we will flourish in the whole world, and it will happen. It used to happen before as well, Hmm. but you need to have belief in your country, and you need to work hard for your country as well. And last thing, because I'm a woman entrepreneur and I Hmm. head a company, so I believe that I just need to empower more women in this direction as well. Like, at the moment, as well, I have 35% females in my company working. So I guess I take pride in saying that. And other than that, girls who head companies are doing amazing. So who wants to join us, they are more than welcome. Other than that, अपना जो है ना वो काम जो है औरतों को और लड़कियों को बहुत सारे वर्टिकल्स में करने की जरूरत है. I completely agree with you. I really believe that we should see more women having position of power and leading businesses, entrepreneurships. This is really like it's time. And औरत औरत की दुश्मन नहीं होती. We बिल्कुल नहीं होती. females help each other Yes, and support to reach the heights that we बिल्कुल. have, that we wish to be at. True. Thank you so much. Chale. Thank you so much, Noor, for having me, and it was very nice. I hope you got the content that you were looking Yes, forward to. yes. Thank you. Chale. Allah You're Hafiz. welcome. Bye bye. Have a good day ahead. Kudafis. You too. A very big thank you to Angela Imdad for joining us and sharing her experiences and journey with us. Her commitment to sustainable waste management is definitely very inspiring. Before I wrap up today's session, I would like to make a request to each one of you that from now onwards we make responsible, environmental friendly choices. It's high time we do that. And tune in next week for another episode of Eco Talks. This is Nurul and Talpur signing off. Thank you.